first time. I grew up watching Fresh Prince of Bel-Air. It's like my favourite show and still love it today. You're just not on the side. Forget if you lose in the race and you're in the world. जा रहे हैं यहाँ से। ये सड़क कैसी है, मेरी बसेज आ गई। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, भीड़ है क्या ज़्यादा? ये खातिब स्टेशन है, ये खातिब स्टेशन हो गया। कार्ड से करके आ गया। हम लोग मोबाइल से घुस गए। रॉन्ग ईस्ट बाय वुडलैंड्स मरीना साउथ पे। हम लोग किधर जाएंगे? मरीना साउथ पियर। यहाँ पे ठंडा 1-2 मिनट खड़े रहो। 3 बजे बैठे हैं। अच्छी है। अभी हम लोग ये अपने स्टेशन पे उतर गए, रफल स्ट्रीट यहाँ पे। अभी हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। चलो ये सब यहाँ पे पड़ेगा तो निकल जाऊँगा ऐसे बाहर। थोड़ा सा माहौल दिखने लगा F1 का। ये मैडम इधर का भी थोड़ा माहौल बनने लगा ना इधर, जहाँ पे इस एरिया में आके। हाँ फिर या मैडम अपने फैन के पास आ गई। हाँ हाँ चलो हो चलो थोड़ा माहौल बन गया। इस बार स्टापन नहीं आएगा। मैडम को उसके साथ फोटो खींचा उठ गया। ऑप्शन पार्टनर मैडम भी ना कलाकार है। वन रफल्स प्लेस। मस्त उत्तरी ये निकला है यहाँ पे डाउनटाउन। वेलकम टू क्या CIMB प्लाजा था, किम प्लाजा 24 आवर एक्सेस टू ऑल योर की MRT स्टेशन। मैक्लारन ऑरेंज वाली है। ये सब मर्चेंडाइज बिक रहा है यहाँ पे F1 का। तो अभी मैडम यहाँ से टोपी लेने वाली है ना। तो हमने यहाँ पे ये कैप्स ले लिए जो किया, जिसमें 3 कैप मैडम को शौक आ रहा था। तो यहाँ पे हमने लिए और कैप लगा, कैप लगा के मैडम की कैप लग गई, अच्छी लग रही थी। वो मैडम स्टिकर क्या लगा हुआ है? रेड बुल मैडम, रेड बुल टीम की। मैं तो उससे मेरे को मर्सिडीज़ खरीदी थी, उसने मैंने मर्सिडीज़ ले लिए। मैंने चलो मर्सिडीज़ नहीं, कैप गाड़ी में तो कैप ही पहन लो। CAP और CAR, बस P को R में आपको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सामने ट्रैक है, यहाँ पे आ गया ये उसका। ये एक्चुअली जो पीछे फ्लायर दिख रहा है उसके नीचे ट्रैक था। लास्ट टाइम जब मैंने देखा था 15 साल लग गए फ्लायर से जाके ट्रैक तक आने तक। सामने फ्लायर दिख रहा है, ये ट्रैक इधर ही है पीछे उसके। ये मरीना बे सैंड है सामने होटल, वही पेड़ के पीछे से देखो पुलटन जो ये उसी का है। अभी यहाँ से नहीं जाता है। ये सामने सिंगापुर का फ्लैग। ये क्या चीज़ है ये? पुलटन होता। हाँ ये सबसे पहला था ना यहाँ पे बना था जो पुराने ज़माने का, इसलिए नहीं। हाँ हाँ फिर इसकी हिस्ट्री है, मेरे को पता नहीं, देख के बताऊँगा।
सामने मरीना बे सेंड, यहाँ से वो सामने फ्लैग दिख रहा है। तो अच्छा, ये जगह अच्छी है, ग्रे ग्रे है लेकिन ना, है मैडम, ग्रे ग्रे है थोड़ा, लेकिन वही आज पूरा माहौल बना हुआ है। कौन सा? हाँ, ये अलग अलग चलता है। चलेगा। तो मैं बताता हूँ मैं यहाँ क्यों आए थे। हम लोग आज यहाँ पे आए थे F1 रेस देखने। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होगी, उसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। अब हम लोग टैक्सी पकड़ के ट्रैक है वहाँ जा रहे हैं, वहाँ देखेंगे आज शाम में क्या एक्टिविटीज़ है। वैसे तो दिन भर चल रही है, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ आने का सिंगापुर वो रेस देखना था, तो इसलिए उसको 3 दिन मिस नहीं करना है, उसका कोई भी इवेंट मिस नहीं होना चाहिए। ये है अपना, यहाँ से टैक्सी ले लेते हैं, टैक्सी से जाएंगे। बहुत देर में इंतज़ार करके इधर उधर लोकेशन पता नहीं लग पा रही थी अभी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे, वहाँ से देखेंगे क्या सीन है। सामने फ्लायर दिख रहा है, मैडम पीछे बैठी है, चिपरक। आज ये रास्ता बंद है आज उसकी वजह से। ये मरीना बे सैंड्स में जाने का रास्ता है, और मरीना बे सैंड्स से देखिए मज़ा आ रहा है यहाँ पे वैसे ही, खा पी के ना, रौनक है, बड़ी अच्छी जगह है। इधर उधर भटकने से बेटर के इधर घूमते रहो। पहुँच गए ना हम लोग जहाँ जाना है ना, यहीं से जाएंगे हम लोग। यहाँ पहुँच गए, यहाँ से ट्रैक में जाएंगे। तो लोग जनता जा रही है, देखो कितने सारे जा रहे हैं ट्रैक से ऐसे ही तो यही तो मना है यहाँ पे। यही मैडम बोली इधर से उधर कंस्ट्रक्ट कर देते, इधर से उधर कर देते, लेकिन यही तो चीज़ है, यहाँ खेला सारा यही है कि फालतू स्ट्रक्चर नहीं बनाने हैं। ये क्या ना फुलरटन बिल्डिंग, होटल है फुलरटन होटल के अंदर जाते हैं अभी हम। कल तेरी फोटो भेजना पड़ी चल मस्त होटल है। अभी हम लोग यहाँ लंच करेंगे, उसके बाद जाएंगे ट्रैक देखने। अरे ड्राइवर इसमें रुकते हैं हाँ हाँ, मैडम को बस अपन के साथ लंच करना है ना, तो इसलिए हम लोग इसमें आए हैं। आज लंच पे बुलाया उसने मैडम बोली काश नीचे आ जाए। ओह बॉटल की बॉटल जी से सिंगापुर माइल 0 है ये फुलरटन। कोई बात नहीं, उधर चलते हैं जहाँ से यहीं से आए थे ना। चलिए ट्रैक में मिलते हैं। इधर पहुँच गए, यहाँ पे गेट 5 है फुलरटन होटल। नीचे उधर से आए हम लोग निकल के। एंट्री विद बैक चेक। सिक्योरिटी, अभी हमारा सिक्योरिटी चेक यहाँ पे हो गया। ये देखिए, ये है यहाँ पे कर रहे हैं एंट्री के लिए। हम यहाँ पे हम इधर जाएंगे ट्रैक में। अच्छा, यहाँ से होटल से ऊपर से भी देख सकते हैं। ये कुछ
ये कुछ लग रहा है मेरे को अपन के बंदे सामने। ये रे मैडम, इनमें से किसी को जानती हो तू ऊपर से? ये सारे अभी हम लोग जा रहे हैं, ट्रैक में जाएंगे, वहाँ से देखेंगे आज का इवेंट। अभी कितना 5:10 हुए हैं, 5:30 से होगा। ऊपर से कैमरा लगा रखा है George Russell is close now. He's got an opportunity. This is his first real run on the Ferrari track ahead. Go to the outside lines at Charlotte. ओह वाह, ये रास्ता है जाने का, बढ़िया। ये सामने पुराना कन्वेंशन सेंटर ही है, जो ड्यूरियन की शेप का ट्रैक है। जगह बढ़िया लग रही है, मस्त है ना मैडम? ये हम लोग उधर कहते थे कि मरीना बे साइड से देखा था ना, उसकी शेप ऐसी है एक्चुअली। सामने फ्लायर है, मस्त दिख रहा है मरीना बे। ये ट्रैक है पूरा। नहीं वो तो बहुत दूर है, इधर से साइड से रहेगा। नहीं साइड से इधर आ जाए मैडम, ये जगह खाली है। मैडम इधर खड़ी है। ये ट्रैक भी है, ट्रैक ये सर। वाह मस्त है मैडम, मस्त। मैडम को बहुत मजा आ रहा है। हम लोग ये हम लोग तो जब गए तो फ्लायर के पीछे दिख रहा था वो, इस वाला उधर भी है, ऐसे घूम के ऐसे हो। जनता उधर बैठी है काफ़ी स्क्रीन पे। अभी हम लोग थोड़ा गलत आ गए, गलत रास्ते पे आ गए। थोड़ा जाना उधर, वापस जाके नहीं जाए, ठीक से जाते हैं रास्ता। ये हम ऊपर थे ना, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से नीचे आ गए उतर के। हमें इधर जाना है। ये इतने टॉयलेट बना रखे हैं लोगों ने, इतने टॉयलेट जबरदस्त आवाज़ आ रही है। दर्शन ही नहीं हुए देखो, ये व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इधर खड़े हुए देख सकती है मैडम। अरे मैडम इधर से देखें, बैठते हैं ना कि जहाँ बैठना है। आजा चलो तो देखिए, ये 100 चक्कर मारेंगे आप। बियर क्या बोल रहे हैं? A6 है ना? Tonight it's just qualifying. वो 3 चल ठीक है ना, आ तो गया 3 दारू बियर मिल रही, बियर जब बियर मिल रही मस्त एकदम। मैडम बियर since 1873
ये आर्टिफिशियल लगा देंगे टाइल्स ना, प्लास्टिक के इंटरलॉकिंग टेम्पररी बना रखा है। ऊपर जाके देखते क्या दिखता है, क्या ना पहली नज़र। Their apex and then running wide through the back of turn 2 as we see Ollie Behrman in the background there, and you mentioned these young drivers. One thing I do want to say about Liam Lawson. किधर है? हमने पूरे 1.5 घंटे का वॉक करके यहाँ पहुँचे, कैसे भटकते भटकते। ये अच्छा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पानी पिला दो मेरे को थोड़ा सा, ये मस्त दिख रहा है ज़्यादा। क्या है? बारिश आने का भी चांस है, बारिश है नहीं, नीला आसमान दिख रहा है, तो बारिश गई नहीं है इधर, तो थोड़ा थोड़ी तो माहौल है। The circuit that had the first ever F1 night race. It has a very special place in the heart. Which means we've still got plenty more years to enjoy this one at this event, and one of the things that उधर से वो भी दिख रहे हैं, देखो दूसरे the way that it creates this almost tunnel effect of lights. You'll enjoy that later this evening when we get to practice to really gauge what things might be like come Sunday night for the Grand Prix. Just going on slower, I think that's more about finding a bit of gear. Because really we're a bit late on this one, we would have seen fastest lap we've ever seen. 30.984. ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस So it's all right, we're going to see them get very close to them just in practice part 2. Gone the way of Marina at this circuit. So you would imagine that they're going to be in contention somewhere near the end of qualifying, but it starts with building a good race going to Now we saw the air rake on Daniel Ricciardo's car. Pit lane that they actually struggled to get that air rake off the car. या इधर तो हम लोग उधर से रफल सिटी, अभी हम लोग सेंटेक जा रहे थे। इनका रफल होटल सबसे पुराना हेड होटल ये है। इस स्टैम्फोर्ड ये इसमें तो जा रहा था हम लोग, इसमें ज़्यादा हम लोग उधर से घूम के ना काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ गया। दाम ये JW मैरियट होटल है। Entry with back check. आ जाओ फटाफट, 8 सेकेंड है। आ जा मैडम, 6 सेकंड आ जाए, देख जा पाएंगे, जा पाएंगे, आ जा आ जा। भागिए मत, तुरंत ग्रीन नहीं होता है उनका। ये कुछ हो रहा है, सामने फ्लायर है। वाह मस्त जगह है ना, मरीना सेंटर। Oh wait, didn't you bring him? You brought ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं।
टर्न मारने के लिए, इधर से उधर आने के लिए यू टर्न मारना पड़ा। कुछ ये सिंगापुर के कलर्स हैं, कुछ झंडा बना रखा है एनसीओ क्लब। चलो आगे जाके दिखा सेंटेक सिंगापुर। ऐसा है, ये ऐसा ट्रैक है थोड़ा, ये रेस ट्रैक है ऐसा। ये हम लोग यहाँ बैठे, वहाँ से दिख रहा था ना, ये DHL की तरफ बैठे थे ना हम लोग, तो इधर से गाड़ी आ रही थी पहले। वो भाई उसने कैमरा लगा दिया, डंडा लगा के ना वो चला गया, लोमड़ी निकला। ये चलाक लोमड़ी है, कैसे निकला है ना, ये चलाक लोमड़ी है, हाँ लगा लिया। पुलिस आ गई, पुलिस डंडे पे लगा लिया। वो चलाक लोमड़ी निकला। एस्प्लेनेड और गए इधर से आते थे, फालतू में इधर चले, हम लोग थक गए। ये राइट नहीं है ना, सेंटेक मरीना, ये सेंटेक सिटी मॉल है, इसमें चलते हैं। इसे दिख रहा है, मस्त दिख रहा है। ये पीछे 9 बजे से जो है ना, अभी वहाँ से लाइन में लगे। Street circuit. So tough, so treacherous, है ना, नाइट वाला है challenge for all the drivers, and never more Night so track. than when pushing to the all-important knowledge on board for the race itself. Welcome folks to your pre-show for FP2 here on F1 TV with me, Will Buxton, with Ruth Buscombe-Davey, DHL, हाँ फिर with Mr. James Hitch. Guys, it is great to be back. It is wonderful to be here under the lights in Singapore after what was, Ruth, a pretty frantic FP1 this morning. Yeah, great, isn't it? I love This the round data, चलेंगे the second। elect data. I love वो भी the हम track देखना है। change, that new खाना वाना खा लिया, अभी तो एनर्जी आ गई, much information इतनी थकान नहीं लग रही। ahead of this पहले तो 5 बज गए तो गोली खानी पड़ी। मस्त माहौल हो रहा है यहाँ, दिखाता हूँ। ये जनता I think more बैठी इधर। importantly, let's see how it goes in FP2, but I think more importantly, ओह सॉरी, last few races since we introduced the update, the car's been working well. That's the thing that's more important to me. So across Baku, different temperature conditions, Monza and Zandvoort, which is more what I'm looking forward to. And it suggests on paper that we should be in no different a position here this weekend. The reality of today is whilst it looks good towards the top 10, we had our main... बढ़िया दिख रही है। Whether you call the Lion City home or perhaps you've travelled big distances from around the world to be here for the original F1 night race. Good evening, everybody. Welcome to Track TV's coverage of the Formula One and Singapore Airlines and Singapore Grand Prix 2024 practice session number 2. Greg Rust and Cameron Vanderdugan with you for our coverage. We welcome you on behalf of Formula One management, the FIA, Motorsports International governing body, the SGP organising team who've done a remarkable job here. And for this 15th, if you can, the introduction between turns 14 and 16 this year of an additional DRS zone. We have 4 for this round of the championship. And this will be the story of the next session. Anyway, it was through the first practice, and that's which tyres will they play. So they need to go on top of that. One of the most critical elements in Singapore as they go and practice their race days is practice 1 that 9 of the 14 races here have been won from the pole sitter. So when you take that into account, right in the front, if you were going to be in contention for a race win on Sunday night, looking at Singapore, who's had the most podium seats of the Ferrari, but who's had the most pole positions here? Well, of the current drivers, the most pole positions to Lewis Hamilton, and there's 9
14 and 18 the last couple of years. So Ferrari have been dominant in recent years. Airflow कैसा है? So there's some signs there that Charles Leclerc went there and in this session of why I talk so much about qualifying, Rusty. The conditions right down to the closest we can get. So as a result, there will be a similar situation at some stage here. Great to hear the crowd. There's so much noise out there in the grandstands. We can hear the very good, exciting session coming up. So there will be some long tyre runs right now. 50-50, it's split six the cars on track between medium and decision time. Which one are we going to see? Tyre running, Lando Norris, all working. So we're just listening to Max Verstappen on the radio. Back to this team. Sergio Perez failing to follow race director's instructions, so he lost the line at pit exit. Now, black and white flag is a bad sportsman's flag, which means it's your first warning. When he says live telemetry, so the pit lane can actually look at tyre pressures, can look at a number of other settings. Sergio Perez going to be last in this session, but the reason we are following him at the moment is because he is starting to put together first sector. So there's the fine time. Look at this, Alex Albon on his soft compound, the fastest of them all. They lost the rear a bit, I think he just took a bit of curve. Just on your point there, you feel as though it was upset on the curving on the inside first, which compounded the exit situation. Last stint he did.
दिन का खेल समाप्त हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। तो यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे घर, नहा के आराम करेंगे कल के लिए। आज तो काफ़ी थकान हो गई। कॉन्सर्ट चल रहा है, कॉन्सर्ट सिटी हॉल, वो रेफल्स सिटी हॉल जाएंगे। सिटी हॉल अपनी खातिन में जाना है, खातिन स्टेशन पे आगे MRT। सिटी हॉल मैडम क्या हुआ, थकान लग गई? नहीं। हम जा रहे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे। स्टेशन जो है वो रेड लाइन पे है। कहाँ गई रेड लाइन? ये नॉर्थ साउथ लाइन है ना ये वाली, इस पे है। जुरोंग टू वुडलैंड जाना है। खातिन स्टेशन पे, खातिन स्टेशन पे। अब यहाँ से थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, घर पहुँचेंगे 11 बज के 11:05, 11:30 तक हमारा प्लान था आज घूमने का। 11:30 तक का प्लान था, मैं बता रहा था ना आपको। तो अब 11 बज गया लास्ट। थोड़ा सा वॉक करना है बिल्डिंग तक जाने के लिए। खातिब स्टेशन निकल गया बाहर। एशियन रिंग रोड पिकअप पॉइंट। ये हम MRT पहुँच गए। हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के जाएंगे ट्रैक पे, मैक्सवेल स्टेशन। ये पगोड़ा के सामने ही स्टेशन है। हमें कहाँ जाना है? वुडलैंड नॉर्थ वे शोर। ट्रैक पे जाएंगे। पहले टैक्सी से जाने का प्रोग्राम था, अभी देखा जाए पास में ही है तो हम इससे चलते हैं। हाँ आ गया स्टेशन। यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम ट्रेन पकड़ने के बाद बताता हूँ। स्टेशन है बढ़िया एकदम, सामने साफ़ सुथरा चकाचक। ये मस्त लग रहा है स्टेशन ना, साइड में एकदम मस्त स्टेशन है, साफ़ सुथरा बढ़िया, अच्छा लग रहा है। यहाँ का मैप है, मैप दिखाता हूँ आपको। ये मैप है, देखिए अभी पहले पड़ी हम कहाँ हैं, पहले देखिए मैक्सवेल टाउन में हम। मैक्सवेल स्टेशन। अब अभी उसी स्टेशन के अंदर आपने कुछ खाना नहीं, तो अभी इधर ये मरीना बे स्टेशन था। अभी हम लोग यहाँ से मरीना बे स्टेशन करके दूसरी लाइन। तो एस्केलेटर की हाइट कितनी है? बाप रे,
कतई चांदनी चौक का है वो हो रहा है। तो ऐसा चांदनी चौक में इतना बड़ा एस्केलेटर, इतना बड़ा, 2 लेवल है लगता है स्टेशन के ना। नहीं एक्चुअली समंदर है ना यहाँ, उसको उसके नीचे टनल बनाए, लेट नीचे, काफ़ी नीचे। बड़ा बड़ा 3-4 एस्केलेटर। कितने कौन सा लेवल पे जाना है? कि हमें CCL में जाना है कि NSL में? ऑरेंज में जाना है कि रेड में? वैसे ही तो एक लेवल के ऊपर दूसरा लेवल, जो कितना बड़ा है। हाँ ये कितना बड़ा है मैडम? बाप रे, कितना बड़ा एस्केलेटर है। तो कितना बड़ा। ठीक है, वो एक्चुअली ऑर्डर में बनता है। ये आउट आ गया तो कुछ ना क्या हो गया? अबे वो तो फिर नीचे चले जाओगे तुम, तो फिर क्या करोगे? We are also planning to jump. चलो ओके कम आ जा। ओके 1 2 3 4 अभी पैदल चल, पैदल ये सड़क हो गया। ये है उधर वाला, ठीक है उधर। फिर लोग नीचे उतर के आ गए क्योंकि हमें बीच वाले इसमें चलना था। NSL CCSL 10 मिनट तो उसी में निकल गए। ये बना तो रखा है इधर लाइन ट्रांसफर मैप। ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे। चलो अब ये वो मरीना बे स्टेशन से चल के चलते हुए बहुत बड़ा स्टेशन था, दुबई एयरपोर्ट से बड़ा। हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये बैठ के जा रहे हैं अभी। यहाँ से फिर हम लोग ट्रैक पे जाएंगे। पैटर्न गेट 1 सारी जनता को फॉलो करो। हाँ रोज अभी हम लोग फिर ट्रैक पे जा रहे हैं। आज 3:30 बजे इंटरव्यू है, वो देखेंगे। किसका मैडम, किसका है? मैक्स वर्स्टैपन का। चलो आज भी दिखा देते मैडम को। बिल्डिंग सरकार अच्छी बनी है यहाँ पे सारी, बढ़िया। देखो एक ये आइडेंटिकल बिल्डिंग्स थी ना जो वो पैन पैसिफिक। कल तुम लोग बहुत चले थे, आज कम चलना पड़ रहा लगता है। आपकी गाड़ी में नहीं आया कितना चले? आएगा अभी, मोबाइल ऑन करूँगा तो उसमें सब दिखेगा। बढ़िया बिल्डिंग है, मस्त। हाँ खूब ह्यूमिडिटी हो रही है यहाँ पे। ये ट्रैक है इधर जा रही है सारे इधर वॉक, 5 मिनट वॉक है, फिर पहुँच जाएंगे। फिर बैगेज चेक होगा, उसके बाद अंदर जाने देंगे। ये आगे आ गया, नथिंग एल्स कम्स क्लोज। ये है नाइट रेस, सामने एंट्रेंस आ गया, वहाँ से टर्न करना।
पीछे फ्लायर दिख रहा है, मरीना बे सैंड्स। मैडम जा रही छाता लगा के। शिप्रक किधर गया? इधर है शिप्रक। आवाज़ आनी शुरू हो गई इसकी गाड़ी की। वाह, लोग आ गए यहाँ पे। टिकट चेक, बैग की चेक, इंटरव्यू। तो चलिए जा विदाउट बैग। जा मैडम इधर विदाउट बैग चली जा। डिफरेंट स्टैंड है और कल जो रेस वाले दिन डिफरेंट स्टैंड होगा। आज शायद कपड़ा ये इंटरव्यू देखने के लिए आया आज हम। इंटरव्यू चल रहा है। किधर जाना है? She's a lot further back, down in 15th at the moment. She won't be threatened by Bustamante as a result of that penalty, but she'll be hoping to get through on Nobles and then Alcabasi and Edgar a bit further up. So plenty of work to do there. Iberg holding on. 0.9 seconds, you mentioned before, Rusty. Not going to slip too much further. Dorian Madam. now starting to find some speed. Wonder whether this car's been built to आधे घंटे में क्यों? have speed at the back end. So Dorian Park, fastest of all to the first sector. Personal best for the other riders around her. Abby pulling on a personal best first sector as well. कर सकते pit stop challenge। Right on board with Thunder Alcabasi. That's Laurie in front of her. One more time, keep on, you want to go ahead, one more time. Okay. You can do it, go for it. Hold on, sim 1 was 3.38. You know, that sort of sense of This is urgency. the timing, right? And the Alcabasi to try and get by. I think that's Ready? Laurie Three, in the wild two, card entry. one, go! At the moment, in position number 6. So he's not sure if he's going to be able to get the advantage. I think Ferrari have more screens than Okay, well you guys are lucky because you're going to get to see all 5 of those teams up here with us very shortly. We've got literally 5 minutes. I mean, I like Oscar a lot, but everyone What's picked going Oscar. on? Yeah. Everyone's picked Oscar except for Valtteri who picked Joe. Also, I think Valtteri doesn't talk too much. You just want some quiet time in the escape room. Quiet and strong on the glass. Okay guys, put your signs up for our drivers. We have so many signs and so much support for each and every one of you. So much love. Do you have any final words for the fans before you get racing? Well, thanks for your love. Thanks for the support. It's amazing year after year. We'll try to put on a good show race for you. मैडम को बहुत मजा आ रहा है। Yeah, thank you to all the fans there. It's amazing what you're doing for us. Thank you very much. Yeah, thank you guys. I mean, it's amazing to see all of you here. Some really great signs. So, all the best. Alright guys, I believe that Kevin and Nico have some hands for you, but please take some hands for मैडम को बहुत मजा आया। क्या था मैडम? क्या था? आ जा। वो उठा दे यार कमर। हाँ हाँ तो। Nico, thank you so much for joining us.
It's a good very stuff. nice crowd. Very nice crowd. Guys, remember, signs down for the moment so the people behind you are able to see. Kevin, welcome back. We missed you last week. It's lovely to have you back here on the stage with us. What were you doing in your week off? We missed you here on the stage. Nothing. Well, first of all, great to be here. This is louder than in the race car, so it's pretty crazy. What did you get up to though while you were having some time? Just time with family? Nothing. It was nice. I mean, unplanned holiday. You know, I finally had a calendar fully empty, so that was great. But yeah, weird to watch on the television. Of course. Kevin, did you watch the race? I watched some of it. I fell asleep. You fell asleep probably in the race. Checo, it was a strong weekend for you back. Obviously, it didn't end how you would have wanted, but you were looking fantastic up until that point. How excited are you to be back here in Singapore, somewhere where we know you go so well? Yeah, it's really nice to be back here. You know, to see all these fans are amazing. Really looking forward to hopefully have a good weekend again here. It's looking a little bit harder, so we'll see what we are able to do today. And Nico, this crowd, I reckon, is one of the loudest that we've had of the year so far. Loudest and largest as well. I mean, I think Melbourne is on the other end. When you struggle to hear their own voice, it's good. It's a success. Good job, guys. What makes coming to Singapore so special? I mean, aside from these amazing fans. Strong voices. And what about the city? Do you enjoy coming to the city and exploring? Do you have time? Average at best, no? Huh? Average at best? No. Sydney's good, but we don't have much time to explore, to see, to get around. So we're obviously here to do the business, but what an incredible scenery, and it's one of the favorite venues for me and one of the big highlights of the season, and it's it's pretty crazy and cool. It is indeed. Max. What have you been up to in the days between Baku and Singapore? Did you get to do anything, or was it literally straight into this one? Yeah, I mean, we flew straight here, so played a bit of paddle. Yeah, just enjoyed myself a bit here in peace. It's good, I like it. It's great. Very nice. Now, we have had 2 fan questions to put to you guys this weekend. First fan question, if you could have another night race anywhere in the world, which location would you pick? Anywhere in the world. But it's a night race. We have enough races, so leave it there. We trade one out. We won't do ultra when we trade out. But... Just one night race and we can cancel 5 races. So where are you picking? I wanted Vegas and we already have it, so Yeah. I'm happy with the ones we have. Checo wants 2 night races in Vegas. Yeah. Max, where would you pick? That's a very good question. Probably I would go for like Mugello, it's just because I like the track. So they have to install a few lights, but why not? That could be fun. चलो बहुत गर्मी हो रही है For Esteban Ocon, Pierre Gasly, Charles Leclerc and here come outriders, everyone. Please make some noise. Welcome everyone, make some noise for Very good, it's even better now that we see you guys. You guys are the loudest crowd in India by far. That's awesome. It's mental. Carlos, I can see. Tonight and Monaco with the walls so closed, it will be a really cool one. And Carlos, you're just loving the signs, but where would you pick as a night race anywhere in the world?
I cannot hear you. Where would you pick to have another night race anywhere in the world? I think Australia would be cool. Aussies in the crowd. Let's get back to this week. If we keep the European time. Okay. And you like the idea? Right, final fan question. If you had to do an escape room with one other driver on the grid, who would you pick? An escape room. This is the best Singapore I've ever seen. And I don't just mean the loudest in Singapore, I mean anywhere. This is incredible, right, Lewis? You guys are incredible. Hey, how you doing? Are you guys hot? We're very hot. It's so hot here today. It's like 12% more humidity today. Yeah, I feel it. Wrong choice of colour today for me, but it's okay. It's okay. Welcome to the fan zone stage, George. Podium for you in Baku. Bit of a wild end to the race. How was that? Yeah, it was nice to be standing on the podium. This is like in our casual, in our civvies, and the stories that we've been telling each other during this time are priceless. So the characters, you learn more about the characters each time we go. Some funny guys. I think we'd all want a little sneak peek into that, but I don't think we're making the invite list, unfortunately. But I'm glad you guys are having a great time. Everyone, put your signs up. There's a lot. There is a lot of love for you guys, so I just want to give you a moment to soak it all up. Because as we said, this crowd is incredible. Put all your signs up, put your hands up. You need the singers, drivers, so they can capture this special moment. Any last words for these fans? George, I'll let you go first. Yeah, I just want to say thank you so much for all of your support. It doesn't matter who you're supporting this weekend. I hope you have a really great weekend. As Lewis often says, stay hydrated. It's hot out there, but just enjoy it. And thank you so much. And Lewis, final word from you. I'm just gobsmacked that Roscoe makes it everywhere. I've never seen a dog in Singapore. Do they have dogs here? Yeah, I've never seen dogs out here, but yeah, like George said, you know, this is, as we said, this is the best crowd. Thank you so much for the warm welcome. And geez, we're gonna give it absolutely everything as always. Let's keep your fingers crossed. Put that little girl with a cap on. Love you guys. Appreciate you. Guys, Cheers, cheers. good luck this weekend, guys. Go well. Thank you so much. Right, guys, can you do me a favour? Can you stay right there? I'm going to ask if you can take a weekend. Not every day you get Will Smith rocking up to work. How was that? Oh, it's so cool. You know, I remember meeting Will for the first time. I grew up watching Fresh Prince of Bel-Air. It was like my favorite show and still love it today. And I remember I first went to Nelson Mandela's birthday in London. He's like 92nd in 2008. Yeah. And I was sat at this center table with Nelson Mandela like 2 spots away from me. Wow. And I couldn't wait to get up and go and meet Will Smith. And as soon as like the event, like the stage people were done, everyone stood up and I rushed across this crowd to go and meet Will. And I remember like I stood on like Bill Clinton's foot
and barged into so many people just to meet Will, and so it's very surreal to be at this point in my life and like know this guy, you know, as a big inspiration. Is he a big fan of F1? I know he was supporting you last weekend. I don't think, I mean, he drives that in Bad Boys. He drives a pretty cool Porsche and then a Ferrari in his second Bad Boys 2. But I don't think he actually knows how to drive, as far as I'm aware. I don't know. You got some teaching to do there. You got some teaching to do. George, how excited are you to get out on track? I know yesterday was difficult, but this is a circuit that's incredible to drive under the lights, right? Yeah, this place is awesome. It's yeah, we always love racing around here in Singapore. It's just so hot and humid and difficult, and it's like a real challenge for everyone to drive. But it's सबसे लाउड क्राउड था मैं 2-3 बार नाच बहुत थक गया भैया, इतना पसीना निकल गया। अब यहाँ से बियर पीने का बारिश कहीं और, बारिश हो रही, यहाँ नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है, वहाँ से हवा आ रही है ठंडी। इतने सारे सबको देख लिया, बस नॉरेंज तक किया। यहाँ पे हमारे एक्सेस नहीं निकल, यहाँ पर एक्सेस नहीं निकल। चलो 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 आ जाओ, चलो बियर पियेंगे। अरे जिन पी लेंगे, पानी पी लेंगे, पानी पी लेंगे। आप बियर चाय भी लो, चाय टी आ जाओ। हम राम कोक पियेंगे, राम कोक। लाइन लगी है वहाँ से। ये जूस वाली वो है, सॉफ्ट ड्रिंक वाली चालू है। अरे सॉफ्ट ड्रिंक वाली चालू है शिपरक, और सॉफ्ट ड्रिंक वाली चालू है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने मन से। थोड़ी ठंडी हवा खा लें। Are you ready to make some noise? In 3, 2, 1, let me hear! That's how we like it, ladies and gentlemen. Singapore Grand Prix. Don't forget, keep the energy up, stay loud all weekend as we count down to qualify here at the Singapore Grand Prix. Ladies and gentlemen, now on the sales stage, just spin your head right round. Please welcome Oscar Kaufman. ट्रैक पे जा रहे हैं, ये रिवर है। हमको A17 में जाना है। हार्बर के गेट से सामने दिख रहे हैं दूर पे, वो ये यहाँ से।
टायर दिख रहा है। Mark Regnier hangs on to third, only just. Well, 206.1 Rusty on that last lap versus a 204.5. They've been running in and around the 4s and 5s, so Regnier did have an issue on that last lap. And it looks from the some of the camera shots that we saw that it was slowing a little, the 86, for some reason. So not sure what happened there to Martin Regnier's car, but he hangs on to third by tenths of seconds. TV live here in Singapore. We hope you're enjoying your Saturday experience. Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix. Yo, I can hear now. कितना नंबर है? सबसे फास्ट कार यहाँ चलेगी, सबसे फास्ट स्ट्रेट है ना? क्वालिफाइंग में भी यही है? क्वालिफाइंग में भी सारी गाड़ियाँ निकलने आने पे 5 मिनट मतलब मैं आपको फास्ट बैटरी नहीं दे रहा। क्या हो गया? मेरे को भी खत्म हो जाएगी। इसमें 89-90%। Yesterday, Russell talking about that. How about the denim skinny on the RVs? Hype was the word from the team yesterday. Very cool. Is the defending winner, Carlos Sainz. Very memorable race here on the streets of Singapore last year for this driver. Some great strategy that unfolded to achieve that in a year that was otherwise dominated by Red Bull. And Red Bull here for Max Verstappen and even Sergio Perez appear to be. To there, he's in the final sector. One last week had to attack and defend. It was a very stressful, immensely stressful. He goes top now with 32.957. Medium compound tyre at the top of the order. ये मैंने उठाना ही है मैडम। मैं अरे शिप्रा गया इधर। बेस्ट सीट है। मैडम बैठिए। Third place from Austria, Martin Regnier's. हमने मरीना में साइन। In second place from France, that is Gilbert. ये बेस्ट सीट है। Second place. मस्त सीट है ना मैडम? बेस्ट सीट। That is Gilbert. ये सबके पिट्स बने पिट्स। बहुत थक गया सो चले कल ज़्यादा थके थे, आज तो नहीं लगे, चल आज थोड़ा कम चले, लेकिन वो खड़े खड़े वहाँ पे बहुत हालत बिगड़ गई। वो जो वहाँ खड़े रहे ना, है मैडम कैसा रहा तेरा वो खड़े होने का प्रोग्राम? मस्त था। मैडम को बहुत मज़ा आया, मैडम और सारे उनके ड्राइवर एकदम लाइव देखने को मिल गए। ये सबके पिट स्टॉप्स हैं। ये उसके सोनाटा कल फिर आ गए, ये फिर आ गए यार हमारे साथ तो नहीं। And now the Pro-Am podium for race 4. Parties around, you know? Asia in third place. Representing China. Podium again. Come on, Nice to meet you. So good. Yeah, very hard to win. Did you guys attend the... Yeah. She was there. Yeah, she was there. She was there. I greeted you that time. No?
ये लोग हमको अकेले में मिले थे, हमारे साथ ही बैठे थे। तो आज हमने डिफरेंट स्टैंड के टिकट्स लिए थे, तो ये लोग भी हमारे साथ ही आ गए। व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये जब हमने वाफ में जो इवेंट देखा था ना, उसका रिकॉर्डिंग दिखा रहे हैं। देखिए सामने ना ये इंटरव्यू चल रहा है सामने, ये वाफ से इंटरव्यू जो देखा था। Yeah, it's really nice to be back here, you know, to see all these fans are amazing. Yeah, looking forward to hopefully have a good weekend again here. It's looking a little bit harder, so we'll see what we are able to do today. And Nico, this crowd, I reckon is... सफाई चल रही, सफाई देख। आपका नेट नहीं चल रहा, यहाँ पर वाईफाई भी नहीं मिला है। क्या करना है तेरे को? अभी 5:30 हो गया, अभी शुरू हो गया। So Rusty, just while everyone can hear me loud and clear, the reigning world champion, the dominant force in Formula 1, 7 race wins this year already for Max Verstappen, and his car yesterday was only good enough for 16th, 13th and 18th in each of the 3 sectors. We're in the Scuderia Ferrari garage. Charles Leclerc getting ready. He said, "Come." Would you please put your hands together, Singapore? It's a super Saturday here. 5 great decision for the Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix. We get some cars on track here now. So cool to see Formula 1 back here in a massive season. 24 events. This is the 18th stop on the tour. We've got Austin, Texas to come, Mexico as well, Cam. And it all wraps up in the Middle East in early December. Huge undertaking for the teams. And just last week they were in Azerbaijan, so it's a really tight turnaround for everyone involved. Medium compound tyres for both Fernando Alonso and Lance Stroll out on track. Fernando Alonso, his history here goes a long way back. Fernando Alonso, podiums 5 times, 2008, 9, 10, 12 and 13. He's a 2-time winner, 2008, 2010 here in Singapore. But this we've seen this not again, slightly smaller than we've seen in the past. Fernando Alonso, this will be his 395th Formula 1 start. And I'll spare that wait until Formula 1 hit the track for our lizard friends come out and join us on circuit. Oscar Piastri, so many Australians. I was talking to Ariana Bravo, as were you yesterday, Rusty. There's so many Australians here. And we went, well, it's quite close to Australia. The performance of the McLaren has been incredible throughout this weekend so far. 2 sessions. I think the Ferrari is the stronger package. Address this. Just on the point of Charles Leclerc, you might have seen some cool stats rolling through the bottom of our big screens before. 2 weeks. Think about what Charles Leclerc did on a hard compound tyre at Monza, and then think about what both Charles Leclerc and also Oscar Piastri did at Baku last time out. The tyres, well, they're certainly living up to it, aren't they? Yuki Tsunoda getting ready. How about that helmet, hey? Very cool. Practice 3, of course, final chance to get that car tuned and in shape for the race, which typically runs nearly its full 2 hours. Welcome, one and all. Yeah, we hope you're having a great time. It's tremendous to have you here. Look at all the faces and the faces of the drivers too. There's so much support. We feel like it's always been good over the previous 14 Singapore GPs, but it's another level in 2024. Interesting strategy from us to on the
sides had brake issues yesterday. Last year's pole man, last year's race winning in Singapore. Finishes his. Alongside Carlos Sainz with a car that is threatening with two of its drivers to be in the top 10 potentially here in at the top of the lap of the talked about Australians before, his partners and Aussie, very, very good songs. Got a gin company together. They're they do an off-road cycling race. So I think it's called Relive. In Australia this year, we saw as a raw all that kind of stuff. We don't know what to see. Kevin Magnussen, one of my favourite guys. And so now I can, well, you can do basically saying he's going to send the next thing. So Kevin Magnussen. Characters in themselves, and there's a few that we may not see.
अभी 9 बजे से क्वालिफाइंग है। चलो And whilst I called it, And McLaren, are they the ones to beat, perhaps? and McLaren, 2 in a row from practice. चलो अब 9 बजे तक खाना वाना खाएंगे यहीं आज। Full of me. कल बाजार गए थे, आज हर यार चलना बहुत पड़ता The है। favourite in qualifying as it stands right now, Rusty. To be 2 McLarens, 2 Ferraris, 2 Mercedes, and 2 leads. जनता की मोबाइल लगे मोबाइल Not so many crowds out, as you can see. Still a busy paddock, but nowhere near as busy as earlier, and that's because, of course, the drivers have made their way from the garages, which is just where you're seeing these people walk in here, and they've made their way over to the hospitality now. So generally we get a lot of fans gathering around pre and post sessions immediately before and after to try and catch a glimpse of their favourite drivers. But now the drivers are tucked away in their hospitality, getting ready for that final opportunity to go flat out around this circuit before we get to the Grand Prix tomorrow, and that of course will be in qualifying where we see will he manage to do it again in ways ये लोग बैठ के खाना वाना खा लिया यहीं बैठ के आज हम बाहर नहीं गए बाहर जाने यहाँ पे चलना यहाँ इस स्टैंड से ज़्यादा चलने का था ना कल वाले स्टैंड में तो एकदम पास में था वहाँ इधर ही खाने पीने के ग्रैंड स्टैंड है इसे खाने पीने का इंतजाम अच्छा बढ़िया चाय नहीं है चाय नहीं दारू का अरेंजमेंट है खूब भरपूर गर्म चीज़ नहीं चाय कॉफ़ी भी नहीं दारू पियो जिन पियो कॉकटेल पियो सब पियो खाना वाना खाओ बहुत बढ़िया है ये जितने लोग हैं ये सब ना पिट एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं टिकट लेके और लाइन पे सारे पिट्स देखने के लिए बढ़िया ग्रैंड स्टैंड है खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है ये फ्लायर है स्काई लाइन है लाइन बढ़िया दोनों खाना खाने में लगे हुए हैं एकदम मंडे पे ला रहा है Sprint qualifying decides the grid order for Saturday's sprint. मैंने कुछ खाया नहीं है और प्यास बहुत लग रही है कभी कुछ पीऊँगा ठंडा चाय और कॉफ़ी तो मिल नहीं रही यहाँ पे मज़ा आने वाला है बढ़िया
कि दिन में जो हम लोग गए थे ना उधर जहाँ इंटरव्यू चल रहे थे वहाँ पे अभी म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं वहाँ तक जाने की, ऐसी थकान है ना। वहाँ डेली कॉन्सर्ट चलता है। फिर पीछे देखिए खाना खाने का है। चालू हो जाता है टैप, वो टैप का पानी लोगों ने खलका दिया है बच्चे। पिक शॉप में देख के आते हैं मैडम का, कहीं से इसी लाइन में सीधे सीधे चलते जाएंगे, सीधे सीधे जाते हैं। ये सारे पिट्स बने हैं ना, इसमें सबकी गाड़ियाँ हैं, सबके नाम के, है ना। जैसे गेस्टली ऑन, किधर है ये ना। हैमिल्टन वो एकदम उधर है लास्ट में। हैमिल्टन जॉर्ज रसल। मैडम तो नीचे से दिख रही है। चला रखा है। यह तो देख दिखा लोग पत्ते के नीचे मेरा फोन ना गिर जाए बस। भैया आप ध्यान रखो, यहाँ हवा भी अच्छी आ रही है ना। यह तो देख आया, देख ना, देख देख गया। अरे आया भाई।
ना बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ह्यूमिडिटी है, एंड बजी है ना। ये देखिए पीछे पिट स्टॉप है, थोड़ी हवा लग रही है वैसे। मैडम हम लोग यहाँ से चल के आए पूरा एकदम इधर से, हमारा उधर था ना, वहाँ दूर पे था उधर, वहाँ पे मैं यहाँ पे आए देखता हूँ। ये देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं मैक्स वर्स्टैपेन के पिट स्टॉप में, और ये पोल पोजीशन के लिए गाड़ियाँ यहीं से स्टार्ट होती हैं। ये ना ये 5 लाइट्स हैं, 1 बाई 1 चलती हैं। इनका जो पिट है तो फास्टेस्ट पिट स्टॉप था 1.9 का, कुछ किया ही नहीं होगा, ऐसे छोड़ दिया होगा। फट से बदल दिया था, फट से बदल दिया, तुमने देखा था? ये है देखिए इधर, ये है ऊपर फ्लायर, और पीछे वो मरीना बे सैंड रेड कलर का दिख रहा है। पीछे देखिए, पीछे ये ऊपर पवेलियन है, ऊपर देखने के लिए VIP एरिया तो सामने भी है। बढ़िया खाने पीने का उत्तम प्रबंध है, बढ़िया। ये आज हमने स्पेशल टिकट लिया था आज यहाँ का, कल का और अच्छा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं जो आई एम टेकिंग माई पिक्चर, नो प्रॉब्लम। यहाँ लोगों को टेंशन हो जाता है। तो यहाँ का टिकट लिया था, यहाँ का महंगा टिकट था ग्रैंड स्टैंड का। कल का और अच्छा वाला है, कवर्ड वाला, कि अगर बारिश वारिश हुई तो कोई दिक्कत ना हो। टिकट भी ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख रुपए का टिकट है। महंगा है। मज़ा है, बढ़िया। मैं बता रहा था ना, स्पाइडर कैमरा है ना। Is the most exhilarating hour of the entire year because this place demands perfection. It really does, and this is what drivers love. यहाँ पे इसका इंटरव्यू होगा, यहाँ पे खड़ा है ना सामने, ये सामने खड़ा है, इधर इसमें around these long street circuits. It is so challenging to track changing every single lap, but this is where you come from. This is what really fun. Extracting the maximum out of the car, but the conditions are so hot. It's such a physical challenge around it. You have all sorts of क्वालिफायर चुनाव 9 बजे में कितना बजा? मस्त फोटो आ रही है, बढ़िया एकदम ना। Yeah, but like before I would be able to figure it out. It's the knockout session that establishes the grid for tomorrow night's 62-lap Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix. On behalf of Formula One management, the FIA missed the cut and the energy of those that are there. This is going to be a terrific session, Cam. Good evening, Rusty. Good evening to everybody joining us here for qualifying. The red compound tyre, the one on the left of screen, that is the tyre we'll be looking to throughout qualifying. It is the fastest tyre, and that is what will set our grid later today. The track is set, the scene is set, and Lando Norris is the man in control at the end of practice. He was well and truly clear of the rest of the field. But Rusty, Ferrari have, I think your words
words were something in the pocket. That's, I think, the question, isn't it? It wasn't a completely problem-free or trouble-free run in free practice 3. Friday was mighty from them. Hearing a moment ago there from Paul Buxton and James Lynch. Just minutes away from cars being released from the pit lane. Lance makes a noise. Singapore Singapore, as they start to come out very shortly, make their way into the truck. We'd love you all to get to your feet and wave your arms. The drivers can see you as they make their way out of your nose, whether you're up here in the Marina Bay Sands, down in the main street. A big shout out to everybody in 23. We can see you on the rooftop there. I hope you're enjoying what should be a spectacular session. Last year, Pole went the way of Ferrari. I was enjoying all posted dancing the ladies down there. They're all so close to the girls. Cheers. Good. Still happy with some of the moves. Now, if you are a member of the Tifosi, they need your support. And it good yesterday. So 20 seconds in the first sector. This is better. Race pace. But right now, everyone getting out of the way. Hamilton, and George Russell out. George Russell was bringing in relation to this car and the way that he extracted the speed. All that far apart on the racetrack, George Russell and Lewis Hamilton, so let's just see what that lap time comes up. The nature of the way the circuit is, you re-enter immediately across the turn 2. Back Max Verstappen, but he's 3/10 off his fastest from FP3. Carlos Sainz, not comfortable, not settled in that car. He sits back in 6th at the moment. Which they have, so we get an indication of who's on the mark. Salvers, with 7.5 minutes remaining, are in the bottom 5. The Williams of Colapinto, who we saw have that kiss with the wall, he's back in the pit lane. Sitting back in. Master was in 19th. That's salvaged something. Carlos Sainz in 15th. Oh my goodness, you would be a bit worried with Carlos Sainz in 15th. I'm not seeing any more improvements. Checkered flags throughout, and there's the rest in pit lane. So the 5 that have been knocked out: Daniel Ricciardo, Lance Stroll. Knocked out in Q1
traffic so far. Saw one car there a moment ago, but cleared it nice and easily. Good start to Q2. New fastest first sector, Max Verstappen. Time to make in the next sector. Singapore, if you're a fan of Red Bull racing, He's chasing down the 26th. rode it really nicely before, and it's good. The middle sector's good, the best we've seen so far. 37.663. That middle part of the lap just then by Max Verstappen is now the number that the rest of the field had to beat. He's flying. Keep it together through the bottom corner. Remember, it's turn 19 that came unstuck for him. Two more corners to go. Max Verstappen is in the And Fernando Alonso for Aston Martin, the man who helped start this incredible पानी खीरी से कैमरा के बाद मेरे जाना बियर 2026. आपका बहुत टॉप हो रहा है इतना पीता हूँ potentially going to open the account. You can see him there. Got some great recovery teams and officials here. Previous swing looks like the worried face. He's seems like Carlos is okay. So the question mark now is how much damage to that car. Good flag. We get this one back underway. They'll have to repair that ball. There'll be a bit of a time delay here. They have to put the ball back together. This is identical as to what happened in Q1 in 2023. Carlos Sainz will start the Grand Prix 10th. He seems kind of shocked about the grip that wasn't there. The Max was there on that colder rubber. He was just setting off as they cut through those final turns. You want to be at max speed by the time you nailed it. We're going to play some music here while our team go to work and repair the safety barrier. We will have the final exciting 8 minutes of Q3, not too far away, live here on Track TV.
Exactly. Yeah. स्ट्रीट में जनरली लोग कर नहीं पाते खत्म हो गया मैडम का 2 में आ गया, 2 में नॉरिस पोल पोजीशन पे और कल रेस होगी। Man, qualifying has been a disaster for me all year long, and I've just been working and working and working, trying to get myself back up there. And all of a sudden, I can't get alive in qualifying for the first time in a long time in qualifying. It's a little bit of a shame because we get into rhythm, and it's the same for all of us. But getting that lap at the end was a little bit tricky. But I think there's maybe a tiny bit more left in the car, but I'm really grateful for it. And mechanics, we've been moving up and down on balance. We changed everything this weekend on each day, and the mechanics have just been faultless. So I want to say a big thank you to them, and I hope that we're in a good position to fight for the front tomorrow. Yeah, I mean, huge improvement obviously over single lap pace. Do you think the changes you made in the car are going to translate to good race pace tomorrow? That I have no idea. You know, one day at a time. I mean, इतनी जनता आगे उतर के कॉन्सर्ट के लिए इन्होंने यहाँ पर शायद रास्ता दिया है ये मैडम इधर बैठी है अभी, हिल नहीं रही। चल उठ जा, वो झंडा फरारी का झंडा फहरा रहा है वो, ये ऊपर स्टैंड है VIP, बड़ा टीवी लगा हुआ। फ्लायर में 1 घंटे के अंदर जा सकते, लेकिन हम लोग को ट्रेन छूट जाएगी, टैक्सी जाना पड़ेगा। पीछे कितना कलरफुल स्टेशन, उधर से है। वाह 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 वाह, टंकी बजा रहा है। मत थोड़ा बजा रहा है। हाँ कॉफ़ी पिला दो, कॉफ़ी पिला दो, कॉफ़ी पिला दो उनको, पिला दो पिला दो। पी ले मैडम। नहीं मैं तो पीता ही नहीं। रेफर सिटी मॉल मैं हाँ चाय है क्या? चाय पी लूँगा, कॉफ़ी नहीं पीता। लाइन लगी, लाइन अबे लाइन लगी है तो क्या ना टीटरा कुछ खाना है? आरुषि की फेवरेट ये लेना है, अच्छा लग रहा है। ले लो ले लो 15% F1 टिकट। वो भी है।
साथ में ये ले लेते हैं कैपिटल के मेक इट केक एंड ड्रिंक है ना। हाँ ये तो भी लेना ठीक है ये ले लेते हैं। हाँ ले लो क्यों खा रहे हो? खा रहे हो? अच्छा कॉफी है। पीच उलोंग टी केक। और आप? ऋषि को ये चिकन सैलेड नाश्ता पे कौन सी पीच है आपको? ब्रेकफास्ट ही बोल देना। हम लोग तो थोड़ा रेस में जाने से पहले थोड़ा चाय थोड़ा पी लेते हैं। अच्छा वाला सफारी हम तो रेस्टोरेंट वाले लोग मैडम वाले जो है ना जो मैडम बोलेगी वही देख लें। रेड बुल आज फाइनल है। ये देखो मैडम शिप्रक मरीना बे सैंड सामने वहीं से हम गोल गोल घूम के ये इधर ये गेट 3 है बैक चेक भीड़ बहुत हो रही है। पूरा गर्मी बहुत है हमेशा की तरह। कल ज़्यादा गर्मी थी आज थोड़ी कम है। विद नो बैग में चला जाऊँ विद नो बैग। हम लाइन में खड़े हैं। मैडम किधर गई? कौन सी वगैरह पे क्या गिर गया? वो नीचे चला गया। पता लोग में चला गया वो तो ट्रक है मैडम चल गया छोड़ के ना अंदर धरती में धस गया। अभी शुरू हुई आवाज़ आ रही है ना आपको? रेस जो रही है प्रैक्टिस चल रही है प्रैक्टिस नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं आने जा रहे हैं। और कुछ सामान तो नहीं रह गया? नहीं बैग वाले को फिर थोड़ी चेक करते हैं। तो सामान तो नहीं रह गया ना? सिटिंग अभी कितना बज गया? 7:30 बज गया। 7:30 8 बजे से रेस। ये सब यहाँ पे है अरेंजमेंट्स कर रखे हैं इन्होंने। ये ट्रैक है बढ़िया। हम लोग को उधर जाना है पडांग। सामने मरीना बे साइंस दिख रहा है। मैडम आ जा उत्तरी ये ओवर पास है ट्रैक के ऊपर। ट्रैक के ऊपर से जाएगा। हाँ बंद है बंद कर रखा है। मैं सोचा था खुला होगा। चलो कोई बात नहीं।
एग्जिट ओनली लिखा था उसको पढ़ रहे हैं, वो एग्जिट इधर के लिए। मस्त माहौल हो रहा है, एकदम मस्त लाइट वाइट। ये बिल्डिंग तो कितनी अच्छी दिख रही है इधर, ये ऊपर इधर इधर। वो A4 में जाना है हमें, A6 A4 उधर है वो देखो। वो देखो मरीना बे सेंट शिप को पीछे से देखिए। आजा मैडम आगे। वो देखो शिप ऊपर। कमीना होगा ये हम लोग के साथ हमारे साथ 3 दिन से बैठ रहे हैं लोग, आज से बैठे हैं। Got one of those for your hands. अभी हम लोग यहाँ अभी 10 मिनट बाकी हैं रेस शुरू होने में। चलो रेस शुरू होगी तब तक देखते हैं। Ladies and gentlemen, in a few moments, the national anthem of Singapore will be sung by the Singapore Airlines cabin crew together with the voices of Singapore and the president.
and keep hitting it out of the park every year. Wherever you've come from around the world, we hope you've had a fantastic night so far, and the best is yet to come. The main event on track here, and then after the race, Lenny Kravitz, who you've just seen on the grid, will perform at the Padang stage in It'll get awkward, it'll get tricky down at turn 4. The McLaren leads. Lando Norris, Max Verstappen, Lewis Hamilton and George Russell. Oscar Piastri's held down 5th. And they're jostling away in the back of the grid. The Ferraris have only been able to get through to 8th, and Carlos Sainz has lost a few spots. Oscar Piastri through on the Haas. There's a move already. He had to wait a little. Advantage. George Russell also working with Lewis Hamilton. They're still in 3rd and 4th. A lot of work to do for Carlos. Hamilton, they're still in 3rd and 4th. A lot of work to do.
bounce going on. They need to make these last a long time. Having said that, and that's a good gap back to Lewis Hamilton. and that's not what they wanted. They would have wanted to get in front of the Ferrari. Charles Leclerc. Go. Did he go across the line? Oh, is there some potential breach here? Unhappy. We may not realise that Leclerc hadn't stopped at the time, so the team will get on the radio talking small issue with the wing. Nothing serious is the message. Seconds over Max Verstappen. It's 17 between Oscar and Max. Oscar could potentially grab third here, couldn't he? Depending on how the stop shakes out here. I think they're a plan D at the moment. Very slowly. Being told that he's a shot at a top 4 finish here. So the podium seems pretty settled at the moment. The battle over 4th looks to be between 3. Leclerc's in the window there. Results of the slower lap time of 38.0 last time around. As the team said to him, you're going to have to pass Hamilton. But White hole. Slightly going to say and Russell frustrated behind Charles Leclerc. Leclerc get to stop as well in terms of our front runners. We know about some potential plans for Oscar. 16, we're going to go around the outside of someone at 16. So we had to shortcut 17.
Perez. There's the flash of blue. Perez can't clear this Haas. Been a good drive from the One spot nets 2 points. Oh, a bit of a wiggle mid-corner at turn 19. Pit lane. And Kevin Magnussen. Ricardo in what could be his last Grand Prix. Back in pit lane, sitting right back down in 18th. There's the pit back. Back to this battle over fourth. Charles Leclerc from Ferrari, George Russell. He's fighting hard. You see the movement of the car, just struggling. But the benefit he's got is that Charles will start the final lap as he comes past our commentary position now. George Russell, who runs wide, coming through 19th, and sparks fly. Quick look in the rear-view mirror. What does that do for Charles Leclerc in the chase? He can exceed track limits all he wants now. He just needs to protect, and Charles Leclerc attacks. To turn 7. The battle continues behind him. Of this race. Down to turn 4. Took over the lead of the constructors at the last round. Lando Norris makes his way through turn 15. He'll clear Fernando Alonso. He's done it with style. He's done it with class. He finished second last year. Has made the most of his day and got through to stand on the podium at Marina Bay. And the battle that rages throughout between Mercedes and Ferrari, we've heard that a few times over the journey. Well, George Russell, what a drive. He was in the fence last year. He hasn't got points before, but he's done it now. 4 for George Russell. And we've done the race in about an hour and 45 minutes.
car. It shows just how hard you had to work at that Grand Prix. Lando was in another class this race. Tell us, your Grand Prix, you had a difficult start, very close with Lewis at the first corner, and thereafter it was a fairly lonely race. Yeah, I think that's pretty much my race, just by myself. Yeah, trying to do the best I could, trying to manage my own pace to the end. I think the first stint was a bit difficult for us, quite a bit of tire degradation. The second stint was a bit better. I was a bit more comfortable as well. So yeah, that's, I think on the weekend when we knew that we were going to struggle to beat P2 is a good achievement. Of course, we're not happy with second. Now we just have to try to move more and more, and that's what we'll try to do. With Daniel Ricciardo getting the fastest lap right at the end, that meant that the point swing is now 52 points when it could have been 51. It's being ebbed away, your championship lead. Yeah, it is, but this also could change very quickly again, so we just need to keep on trying, keep to, of course, at one point trying to overturn it a bit, you know, not always finishing behind, but we'll see how that goes. And physically, we can see the sweat on your brow, as I presume you're soaked through. Just how tough was that race? It's always tough around here, warm, in a very long race in general, so I'm looking forward to a bit of rest. Okay, well, enjoy that, enjoy the podium. And finally, our race winner in what looked like a dominant victory, Lando, congratulations. Thank you. It was an amazing race. A few too many close calls. You know, I had a couple little moments in the middle, but was well controlled, I think, otherwise. And no, the car was mega, so I could push. We were flying the whole race, and yeah, at the end could just show. So it was a nice race, still tough. I'm a bit out of breath, but a very fun one. Well, you definitely earned your money today. The gap you had, though, did put our hearts in our mouths when we saw you have two brushes with the wall and overshooting one of them. Similar to Qatar last year, but I mean, I wasn't taking it easy. I could have taken it a lot more easy. So yeah, a little dizzy at the minute, but all good. All good. Oh well, Lando, it's a fantastic victory. I think I might have a solution if you're feeling dizzy. रेस खत्म हो गई, पोडियम का होगा। You feeling better? I'll take a hug from a winner. Congratulations, Lando. Enjoy the podium. And in his honour, and that of the McLaren Formula One team, the British National Anthem. Chief Executive Officer of Singapore Airlines. To the second place driver, Max Verstappen, who's 11th podium this year, still leading the World Championship by 52 points. The trophy presented by Grace Fu, Minister for Sustainability and the Environment, and Minister in charge of Trade Relations. Oscar Piastri, 7th podium this year, the trophy presented by Winston Lau, President of Motorsport Singapore. Congratulations, gentlemen. And now let's celebrate with Origine!
bring up the results with Formula 1 Singapore Airlines great podium for Lando Norris. They are exhausted some of those drivers, aren't they? And you'll drink through as we wrap things up. Daniel Ricciardo. Colorful like that. Means he's now 53 points behind Max Verstappen in the championship fight. Had he collided with that, 2 victories have been utterly gone. We look back to Zandvoort, then this weekend. On it from the outset, never really troubled, but winning by over 20 seconds. Oscar Piastri today, though, also had a phenomenal drive. We've got to say that tougher than I thought it would be with the car that Lando had under them. But I'm still seemingly struggling more this weekend. Yet on fresher tyres, towards the end of the race, 2 points continues. He is the king of the outcome that will extend them in the Constructors' Championship. That's the first and third on the road. We'll talk about Red Bull in a little bit because damage limitations to Max Verstappen this weekend, and from one point of the Singapore Grand Prix weekend being faster from 15 to 7th place. Fantastic drive, fantastic result for him in the Drivers' Championships. And then क्या हुआ आपको कैसी लगी रेस? टीवी पे सब पहले टीवी पे अपने अपना वाला जो था ना उसके आगे से जोर 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 जाती थी टीवी जैसे माहौल होता है। क्या खाओगे अभी?